प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। सभी को मेरा जय मसीह की। आज की शाम हमें इस जीवन जल 12वें एपिसोड में आकर एक बार फिर से IPCNR कलीसिया के रूप में अलग अलग स्थानों में बैठकर हमें आराधना करने का जो अवसर प्रभु ने हमें प्रदान किया है, इस अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। प्रभु की दया आप पर बनी रहे, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना भी है। आज की शाम जब हम आराधना में शामिल हैं, मुझे पहली शताब्दी की कलीसिया याद आती है, क्योंकि पहली शताब्दी की कलीसिया में जब सताव का समय आया, उस समय वो आराधना नहीं कर सकते थे। वो गुफाओं में जाकर, कब्रिस्तान में जाकर, पहाड़ों में जाकर, जंगलों में जाकर, घरों में छुपकर आराधना किया करते थे। मेरे प्रियो, पिछले 3 महीने की वैश्विक महामारी के कारण कुछ ऐसी ही स्थिति आज इस 21वीं शताब्दी में हमारे और आपके सामने भी है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, इस परिस्थिति में भी हमें इस माध्यम के द्वारा हमें एक साथ एक मंच में आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और प्रभु के वचन से बलवंत होने के लिए हमें जो प्रभु ने अवसर दिया है, उस अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। क्यों ना हम आज के इस संध्या बेला में हम प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े, प्रभु हमारी सहायता करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज की शाम एक बार फिर से हमें इस आराधना में शामिल होने का आपने जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज की सुबह हम अलग अलग स्थानों में अलग अलग माध्यमों के द्वारा हम अपने अपने गृह कलीसियाओं में आराधना में थे। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अवसर दिए। लेकिन आज की शाम हम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में बैठकर जब एक मंच में एक साथ जब आराधना करने के लिए आए हैं, हम आपकी उपस्थिति आज की शाम को भी हम जब चाहते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता करें। आज के आराधना में, इंटरसेसिव प्रेयर में और प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बोले और हमसे बातचीत करें। इस आराधना के शुरुआत से लेकर अंतिम आशीर्वाद बोले जाने तक प्रभु हम आपकी उपस्थिति और आपकी पवित्र अगुवाई को हम चाहते हैं। आदर महिमा हम आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना में हम प्रवेश करेंगे। आराधना में जाने से पूर्व मैं एक वचन आपके सामने पढ़ूंगा। भजन संहिता 100 उसका पहला और दूसरा है, सैम 100:1 और 2। यहां पर ऐसा लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो आइए, जब हम आराधना में जब शामिल हो रहे हैं, आइए हम शांत पूर्वक ना बैठे, बल्कि हम आराधना में प्रवेश करें। यदि आपके पास कोई म्यूजिकल वाद्य यंत्र है, तो आइए उस वाद्य यंत्र के साथ, झांझ के साथ, या आपके पास ट्रिपल है या तबला है, जो भी है उसके साथ आइए हम मिलकर प्रभु के अभिषिक्त लोगों के साथ हम आराधना में शामिल होने पाए। अभी हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए IPCNR करमेल अंबरनाथ कलीसिया जो मुंबई की है, वहां की कोई टीम हमें आराधना में अगुवाई करने पर है। इसलिए आइए हम उनके साथ आराधना में प्रार्थना पूर्वक हम शामिल हों, ताकि प्रभु की उपस्थिति को आज की शाम हम अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना में शामिल होने पाए। प्रभु हमारी सहायता करें। सबको जय मसीह की। IPC नॉर्थन रीजन के सारे पासमानों और विश्वासीगण सभी को यीशु मसीह का मेरा नमस्कार। आज हम आराधना के लिए शामिल हैं और इस लॉकडाउन के दौरान में चौथा महीने में हम गुजर रहा है, लेकिन अभी तक प्रभु ने हमें संभाला है। हम जिंदा है, प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है, प्रभु की प्रेम है। हालेलुया। हम अपने घर पे आराधना करते हैं, उसी समय अश्रु बहाते हुए लोग जो प्रार्थना करता है, हम सब जानते हैं कि प्रभु हमारी संकट को जानता है, दिल की बातों को प्रभु जानता है। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे, ताली बजाते हुए हम मिलजुल प्रभु को महिमा करेंगे। हम कितना धन्यवाद करो फिर भी कम है। हालेलुया।
प्यारे आसमानी खुदावन प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी सारी आशीषों के लिए प्रभु। आज हम आराधना के लिए उपस्थित है प्रभु, तेरी कृपा हमारे ऊपर उतर दे प्रभु, सबको तू आशीष दे प्रभु, आपकी महिमा प्रकट होने पाए। आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं ग्रहण कर सो के पिता, आमीन, हालेलुया। और भजन संगीता में यूं कहता है, प्रभु को स्तुति करो, प्रभु के नाम को ऊंचा करो, क्योंकि प्रभु ने हमें अलग किया। हम प्रभु की संतान है। जब प्रभु के लोग एक मन होकर स्तुति करता है, प्रभु उत्तर आता है, हमारे हर एक जीवन के अंदर कार्य करता है। आइए हम पूरे मन से, पूरे दिल से हम प्रभु को आराधना करेंगे। हालेलुया। तारे तारे Thank you.
लेकिन निर्बल लोगों के लिए चट्टान के रूप में प्रभु हमें संभालता है। जंगल के अंदर सबसे निर्बल जानवर है खरगोश, लेकिन एक खरगोश चट्टान में वास करता है। हालेलुया। ऐसे दुनिया में कई प्रकार की समस्या है, दुख मुसीबत है, लेकिन छुड़ाने वाला प्रभु आज भी हमारे लिए जीवन परमेश्वर है। जिंदा परमेश्वर अभी तक हमें संभाला है। ये करना तो स्मरण करते हुए, याद करते हुए, और हम प्रभु को स्तुति करेंगे। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। Oh,
आपकी स्तुति आराधना करने के लिए तूने दिया धन्यवाद प्रभु। आपने हमको अलग किया प्रभु, धन्यवाद हे प्रभु। हम अपने आप आपकी हाथों में सौंपता प्रभु, हमको ले चल आपकी आगमन के लिए तैयार कर, दूसरे को तैयार करने के लिए हमको अगुवाई कर। आदर महिमा हम आपको देते प्रभु, ईश्वर के नाम से मान है, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। खास तौर से मैं कोयर टीम का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें आज की आराधना में हमारी अगुवाई की। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे और आपके कलीसिया में, आपके क्षेत्र में आने वाले दिनों में इस सेवा में और आपको इस्तेमाल करे, यही हमारी आप सबके लिए प्रार्थना भी है। अभी हम मध्यस्थ प्रार्थना की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसके 7 में ऐसा लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर ऐसा है तो आइए आज की शाम जब हम आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति जब बने हैं, आइए हम मध्यस्थ प्रार्थना में जाएंगे। आज की मध्यस्थ प्रार्थना की अगुवाई के लिए कानपुर IPCNR कलीसिया के ब्रदर चौधरी जी हमारे लिए इंटरसेसरी प्रेयर में इस मध्यस्थ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना पूर्वक इन प्रार्थना विषयों को सुने, प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े, प्रभु हमारी सहायता करें। जय मसीह की। आइए हम सब लोग मिलके परमेश्वर की आराधना के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ें। हमारे कलीसिया, हमारे IPC नॉर्दर्न रीजन के हर एक अगुवे और जितने भी रीजन हैं उनके सभी अधिकारियों के लिए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय आसमानी बाप खुदावंद परमेश्वर, आज के इस मध्यस्थ प्रार्थना में खुदावंद परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे IPC नॉर्दर्न रीजन के हर एक बहुमूल्य दासों के लिए प्रार्थना करते खुदावंद परमेश्वर, और जितने भी जोन है पिता परमेश्वर, उन जोन में कार्यरत हर एक अधिकारियों के लिए, हर एक प्रभु के दासों के लिए, और हमारे जितने भी कलीसिया हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया में हर एक परमेश्वर के दास और वहाँ के विश्वासियों के लिए, सब के लिए आपसे विनती है, प्रार्थना है खुदाबंद परमेश्वर। आप खुदाबंद परमेश्वर आज के एक इस वातावरण के, इस खुदाबंद परमेश्वर जो विश्व भर में जो महामारी फैली हुई है खुदाबंद परमेश्वर, इससे खुदाबंद परमेश्वर हर एक को छुटकारा दे खुदाबंद परमेश्वर। यदि कोई खुदाबंद परमेश्वर इस कोविड-19 की वजह से यदि कोई पीड़ित है तो पिता परमेश्वर उसको जल्द से जल्द चंगाई दे पिता परमेश्वर। और जिस तरीके से आपने अब तक हम सबको बचाया है पिता परमेश्वर, आगे भी आप हम सबको बचाएं। हमारे IPC नॉर्दर्न रीजन की जो भी खुदाबंद परमेश्वर जरूरतें हैं, जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी उनके प्रोग्राम्स है पिता परमेश्वर, उन सबको आप आशीषित करें। वहां के हर एक परमेश्वर के दासों को आप आशीषित करें। जितने भी जोन में काम करने वाले हमारे परमेश्वर के दास लोग हैं, उनको भी आप बहुत तायत से आशीष करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके अगुओं के द्वारा, आपके प्रभु के दासों के द्वारा खुदावंद परमेश्वर जो भी कार्य योजना है, इन सबको पूरा होके आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। जो वचन पिता परमेश्वर आज आप हमारे जीवन के लिए देते हैं पिता परमेश्वर, उस वचन को एक्सेप्ट करके पिता परमेश्वर हम जीवन में आगे चलने पाए। हम सबके गुनाहों अपराधों को माफ करें। इस दुनिया भर में जो खुदावंद परमेश्वर इस भयंकर परिस्थिति, भयंकर महामारी जो आज के दिन हो रही है, इससे पूरी दुनिया को बचाएं प्रभु जी। हमारे गुनाहों अपराधों को माफ करें। सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते हुए, महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना विनती मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते, खुदा सुने और दया से कबूल कर ले पिता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं खास तौर से ब्रदर चौधरी जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें मध्यस्थ प्रार्थना में हमारी अगुवाई की। आइए उन प्रार्थनाओं को हम अपने कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में इन दिनों में हम याद करें एक दूसरों को लिए। आइए हम प्रार्थना करें, बिचवाई करें, ताकि जहां पर भी हम हैं वहां पर प्रभु हमारी सहायता करे। हालेलुया, प्रभु हमारी मदद करे। ये समय हमें
प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर के वचन से भी सुनने का समय है। किसी ने ऐसा कहा है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम प्रभु के वचन से मनन करते हैं तो प्रभु हमसे बातें करता है। तो अगर ऐसा है तो आज की शाम हमें प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर के वचन से सुनने का भी समय है। आज की शाम हमारे मध्य में IPC NR अंबरनाथ मुंबई कलीसिया के अभिषिक्त दास पास्टर राजू पी नायर जी हमारे मध्य में हैं। वो वचन से हमारे लिए मनादी करेंगे। मैं चाहूंगा हम सभी लोग बड़े प्रार्थना पूर्वक वचनों को ध्यान लगाकर सुने और हमारे जीवन में ये वचन आशीष का कारण होने पाए। साथ ही साथ प्रभु के दास इस वचन की सेवकाई के पश्चात अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आज की सभा को भी समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करने पाए। Praise the Lord, hallelujah. IPC നോർത്തിലുള്ള എല്ലാ ദൈവഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും യേശു നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. परमेश्वर नाम स्तुति हो। IPC NR के सारे मसीह भाइयों को बहुत जल्द आने वाले मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ നിങ്ങളെല്ലാം അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരത്തിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. इस मार्ग के द्वारा आप सबको भेंट करने के लिए और संदेश देने के लिए ये दिया हुआ अच्छा मार्ग के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ഇതിന്റെ വിജയകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും സഹോദരന്മാരെയും ഞാൻ കർത്താവ് നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. और इस सेवकाई जीवंत होने के लिए जो प्रभु के दास हैं, मसीह भाई लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन सबको हम धन्यवाद कहते हैं। ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ ദൈവകരമായി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് അവസരത്തിനായി ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और परमेश्वर ने जिस मार्ग के द्वारा आपको दोबारा भेंट करने के लिए, वंदन करने के लिए परमेश्वर दिया उस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को दोबारा धन्यवाद करता हूं। ലോകം ഒരു വലിയ മഹാമാരിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത്. हम सब एक ऐसे समय में आ चुके हैं जहां पर ये सारी दुनिया बड़ी एक बीमारी से पीड़ित है। വിടുതലായി ദൈവദിനം ദൈവത്തോട് മുട്ടിപ്പായി കരയും നിലവിളിക്ക് ഉപവാസത്തോടെ ദിവസങ്ങൾ അണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലയളവാണ്. और एक ऐसे समय है जब सारे मसीह भाई बहन लोग दुनिया के कोने कोने में छुटकारा और चंगाई के लिए प्रार्थना विनती में लगे हैं। ഇത്തരമായി കുടുംബമായും സഭയായും കൂട്ടങ്ങളായും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് ഈ കാലയളവ്. ये एक ऐसा समय है जब परिवारों, जब कलीसियाओं, जब सारे झुंड मिलकर छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, लेकिन एक बात सच्चा है, ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അവൻ നന്നായി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. परमेश्वर जब एक कार्य को करता है वो उसे भलाई के लिए करता है। ദൈവദിനം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, കർത്താവേ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലയോ? मसीह लोग पूछते हैं, प्रभु तू हम नाश होते हुए देख नहीं रहा है क्या? ഈ കൊറോണ എന്ന ഈ മഹാമാരിയാൽ പല ദൈവമക്കളും വിദേശത്തും ഇന്ത്യയിലുമായി പല ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി. और कोरोना बीमारी के द्वारा कई मसीह भाई बहन लोग भारत में और विभिन्न स्थानों में प्रभु की ओर करीब जा चुके हैं। ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായി വെല്ലുവിളിയായി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. और ये हमारे लिए एक बड़ी प्रश्न होकर हमारे सामने पुकारती हुई खड़ी है। ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പോലും ജനങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. मसीह लोग ये भी प्रश्न करते हैं, परमेश्वर क्या कर रहा है? എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. लेकिन हम एक ऐसे समय में आ चुके हैं जब परमेश्वर उसके लोगों को तय कर रहा है। ദൈവജനത്തെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. परमेश्वर उसके लोगों को प्रेम करता है। അതിനും പറയുന്നത് അവൻ സമ്പാദിച്ച ജനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके कमाए हुए लोग हैं। എന്റെ ഉള്ളതിൽ നിങ്ങളെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. परमेश्वर उसके हाथों में हमें लकीर समान लिख कर रखा ഒരു है। സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ മറക്കത്തേനും അറിയില്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. एक माँ अपने बालक को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी उनके लोगों को हमें नहीं भूलेगा। നല്ലൊരു ശതമാനം ദൈവമക്കളും ഭവനത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ. अभी एक ऐसा समय है जब एक बड़ी झुंड के मसीह भाई बहन लोग अपने घरों में समय बिता रहे हैं। അവിടെ ചേംബറായി അതുപോലെ തന്നെ കരച്ചിലായി ഓൾനൈറ്റായി ജനം ദൈവസന്നിധി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और लोग घुटना टेक कर इस समय के दौरान चेन प्रेयर में, प्रार्थनाओं में, उपवासों में समय भी बिता रहे हैं। ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അയക്കുമ്പോ परमेश्वर जब उसके लोगों को जब प्रवास में जब भेज रहा था, ആലയമെല്ലാം തകർത്ത് കളഞ്ഞു. तो मंदिर सब टूट गए, ആലയത്തിൽ ആരാധനയില്ല. वहां पर आराधना नहीं रही, മറ്റു ദേശത്തേക്ക് അവർ അയച്ചു. उन्हें दूसरे देश में भेजा गया। ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. लेकिन परमेश्वर का हृदय में एक बड़ी योजना थी। ആ ജനത്തെ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. उनके लोगों को उस स्थान में रख कर मैं अनुग्रह करूंगा। അവർ മടങ്ങി വരും. वे दोबारा लौट ആലയം പുതുക്കി പണിയും. और मंदिर दोबारा बनाया जाए। ജനം
സമർപ്പിക്കും. और लोग बड़प्पन प्राप्त करेंगे ജനം പൂർണ്ണമായി എന്നിലേക്ക് അടുത്തു വരും. और सारे लोग पूरी तरह से मेरे करीब आएंगे. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. वो है परमेश्वर की इच्छा. ഇങ്ങനെയാണ് വചനം പറയുന്നത്, वचन इस प्रकार से कहता है, എന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു. मेरे लोगों के बारे में जो कुछ विषय है मैं बराबर जानता हूँ. I know the plans I have for you. मैं जो तुम्हारे लिए रखा हुआ योजनाओं को बराबर जानता हूँ. Plan not to destroy but to prosper. लेकिन ये योजना है तुम्हें नाश करने के लिए नहीं, लेकिन बल्कि तुम्हें उन्नति में लाने के लिए. അടുത്ത നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, हम अगले वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, എന്റെ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും, मेरे लोग मेरे करीब आएंगे, എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും, मेरे चेहरे को देखेंगे, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും, वे प्रार्थना करेंगे ഞാൻ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും, और मैं उनका प्रार्थना അവരെന്നെ सुनूंगा കാണും, और मैं उन्हें देखूंगा ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സംവാദം ചെയ്യും. और मैं उनसे बातचीत करूंगा. ഈ സമയത്ത് इस समय के दौरान ദൈവജനം परमेश्वर के लोग ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് परमेश्वर के करीब आते, ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി परमेश्वर के चेहरे को देखते. ഹിസ്കിയാവ് ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ, इसके राजा जिस ഉയർന്നും പൊങ്ങിയും സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന കണ്ടതുപോലെ, ऊंचाई में वास करने वाले सिंहासन को देखकर യഥാർത്ഥമായി सचमुच रीति से അന്നയെ പോലെ अन्ना के समान ദൈവ സന്നിധിയിൽ परमेश्वर के चरणों में ആത്മാർത്ഥമായി आत्मा से സമർപ്പണത്തോടെ समर्पण के साथ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ हम सौंप देते हैं. ദൈവത്തിന്റെ കരം परमेश्वर के हाथ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിരത്തിലൂടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവശക്തനാണ്. प्रार्थना करने वाले लोगों के द्वारा उसका बड़ी अनुग्रह को उंडेलेगा. Praise the Lord. Hallelujah. നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. हम एक वचन पढ़ेंगे. യോബിന്റെ പുസ്തകം योग की पुस्तक 37 അധ്യായം 37 वचन 21 വാക്യം. 21 वचन നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ഇപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ വെളിച്ചം ശോഭിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല, अभी तो आकाश मंडल में का बड़ा प्रकाश देख नहीं जाता, എങ്കിലും लेकिन കാറ്റ് കടന്ന് അതിനെ വെളിവാക്കുന്നു. जब वायु चलकर उसे शुद्ध करता है. ഇപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ വെളിച്ചം ശോഭിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല, अभी आकाश मंडल में प्रकाश देख नहीं जाता, എല്ലാം മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്, सब कुछ ढका हुआ है, ഒരു പ്രത്യാശയ്ക്കും വകയില്ല. कोई आशा के लिए कोई मौका नहीं. യോബിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. योग की जिंदगी इस प्रकार से थी. യോബിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാം വളരെ ജ്ഞാനികളും പണ്ഡിതന്മാരുമായിരുന്നു. योग का जो प्रिय दोस्त लोग थे सब बड़े ज्ञानी थे और पंडित लोग थे. അവർ അറിവുള്ളവരായി. वे ज्ञानी थे. അറിവ് വെച്ച് അവർ കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. वो उनके ज्ञान के द्वारा एक एक विषय को ध्यानपूर्वक देखकर चलते थे അവരൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തിച്ചേർന്നു. और वो लोग एक आखिरी समाप्ति में योग आए. ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ കാരണം योग इस प्रकार से अनुभव करने का യോഗ कारण തെറ്റിലാണ്. योग में शायद कोई गलती है, രഹസ്യ പാപങ്ങൾ ഇതാണ്. उसमें रहस्य पाप होगी. അവരെ വളരെ കുറ്റം വിധിച്ചപ്പോൾ जब योग को ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. उनको ध्यानपूर्वक देखने वाला एक परमेश्वर था. എല്ലാവർക്കും മാനസികമായ പ്രയാസം, हम सबको एक एक मन को व्याकुल ഒരു करने वाला പ്രാണൻ മാത്രം ഒരു ഉള്ളിലുണ്ട്. सिर्फ एक प्राण अंदर थी. എല്ലാവരും അവനെ വിട്ടുപോയി. सब लोग ने उसे त्याग किया. അവന്റെ ആടും അവന്റെ ഒട്ടകവും അവന്റെ ഭാര്യയും എല്ലാം പോയി. उसके चरवाए, उसके भेड़ बकरियां, उसका पत्नी तक അവന് सब कुछ പോലും ഒരു പ്രത്യാശയില്ല. और आखिर में उसमें खुद को एक आशा नहीं रही. അപ്പം യോബിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാവരും അറിവ് വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. तो योग के दोस्त लोग जो करीबी थे वो सब ज्ञान के द्वारा एक हिसाब वो लोग आगे देख रहे थे അറിവ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. और उनके ज्ञान के द्वारा वो लोग उस विषय का उत्तर नहीं जान पाए. അറിയാം, നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച വിദഗ്ധർ ഡോക്ടർമാര് പോലും മരണത്തിൽ കീഴടങ്ങി. हम जानते हैं अच्छा तालीम प्राप्त किए हुए डॉक्टर लोग भी आज के जमाने में मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നല്ലൊരു ശതമാനം മുക്കുവരായിരുന്നു. यीशु के चेले एक अच्छी सी झुंड, वे मछुआरे थे. അവർക്ക് നീന്തലറിയാം. वे समुद्र में तैरना जानते थे. അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. वे अच्छे सारे विषय को जानते थे. യേശുവരെ അക്കരയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. और यीशु मसीह ने उन्हें नाव में उस पार जाने के लिए कहा അവർ തുഴയാൻ തുടങ്ങി. और वे लोग वहां पर नाव चलाने ഒരു लगे. കാര്യം അവർ ഉറപ്പിച്ചു, एक विषय उन्होंने दृढ़ कर ली, ഞങ്ങൾ തീർന്നു. हम समाप्त हो ഒരു गए. കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, लेकिन हम एक विषय देखते അവർ हैं തണ്ടു വലിച്ചു വലയുന്നതും और जब वो लोग वहां पर खींचने लगे, അവർ നിലവിളിക്കുന്നതും वो लोग जो पुकारने लगे, അവൻ കണ്ടു. परमेश्वर ने देखा ഇരുട്ടിനെ കീറും ഒരു ചേശോടേക്ക് നടന്നെടുത്തു. और अंधेरा को चीरते हुए प्रभु उनके करीब गया. യേശു പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട്, यीशु मसीह ने उन्हें एक प्रश्न നിങ്ങൾ पूछा, ഇത്ര ഭീരുക്കളായോ? आप इतने वीर शूर और इतने നമുക്ക് जानकार ഈ हो, ലോക്ക്ഡൌൺ സമയം നമ്മുടെ അകത്ത്
പ്രത്യാശ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. मसीह लोग हम इस लॉकडाउन के समय पर हमने परमेश्वर की आशा बढ़ती നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. परमेश्वर के बारे में आशा और उनके आगमन की आशा में बढ़ते रहना. വചനം ശക്തമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. वचन बलवंतरी से हमें जागरूक होना चाहिए. വാട്സപ്പ് തുറന്നാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എപ്പോഴും സുലഭമായി വചനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. व्हाट्सएप खोले या फेसबुक खोले, पूरी तरह से हम वचन में महफूज रहे. 24 മണിക്കൂർ വചനത്തെ ദൈവം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ജനത്തോട്. 24 घंटे वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे व्यवहार करते रहता है. ദൈവത്തിലേക്കും പ്രമാണത്തിലേക്കും അടുത്തു വരുവാൻ परमेश्वर के करीब हम आने के लिए ഒരു മുഖാന്തരമായി മാറട്ടെ. ये एक मार्ग बन നമുക്ക് जाए. വായിച്ച വാക്യത്തിൽ കടന്നു വരാം. बड़े हुए वचन में लौट कर आए. ഇപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ വെളിച്ചം ശോഭിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല. अभी आकाश मंडल में बड़ा प्रकाश देख नहीं जाता. നമ്മളും അതേ കാണുന്നുള്ളൂ. हम भी अभी यही देख रहे हैं. എന്നീ കൊറോണ തീരും. कभी कोरोना समाप्त होगा. പലരും പറയുന്നു ഏപ്രിൽ തീരും, ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞു, മെയ് മാസം തീരും, ജൂണിൽ തീരും, ഇപ്പൊ ഡിസംബർ വരെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. कई लोग कहते हैं अप्रैल में समाप्त होगा, अप्रैल गुजर गई, जून जुलाई, अभी कहते हैं दिसंबर में समाप्त होगा. ആരാധനയ്ക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ കഴിയും. कभी हम आराधना में दोबारा एकत्र आएंगे? ചോദ്യമാണ്. ये एक प्रश्न है. ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. कोई नहीं कह सकता. ഇതിന് ഒരു മനുഷ്യരും ആർക്കും അറിവുകളൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. इसके विषय में कोई भी अपने ज्ञान से बराबर एक उत्तर नहीं दे सकता. പലരും നിലവിളിക്കുക, ദൈവമേ ഇത് നീ കാണുന്നില്ലയോ, കർത്താ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നല്ലോ, ആഹാരം കിട്ടാതിരിക്കുന്നു, പലരും നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്. कई लोग पुकारते हैं, प्रभु तू ये विषय को देख नहीं रहा है. कई लोग भूखे भी मर रहे हैं. നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ മടങ്ങി വരാം. हम दोबारा योग की पुस्तक में लौटा. ആകാശത്തിൽ വെളിച്ചം ശോഭിക്കുന്ന കാണുന്നില്ല. आकाश में जो प्रकाश मंडल जो देख नहीं जा रहा, എങ്കിലും കാറ്റ് കടന്ന് അതിനെ വെളിവാക്കുന്നു. लेकिन वायु चलाकर उसे शुद्ध करती है. വെളിച്ചം ശോഭിക്കുന്നുണ്ട്. जब ज्योति प्रकाशमान होता है, ഇരുട്ടിനപ്പുറത്ത്, ये अंधकार के उस पार, നക്ഷത്രമണ്ഡലങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് तारों के मंडल के उस पार സ്വർഗ്ഗത്ത് ദൈവം स्वर्ग के परमेश्वर സിംഹാസനത്തിലുണ്ട്. सिंहासन पर विराज, ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് वो परमेश्वर के चरणों में കണ്ണുയർത്തുവാൻ हाथों को उठाकर ഈ ലോകം മുഖാന്തരമായി മാറട്ടെ. एक लॉकडाउन हमारे लिए एक मौका बन जाता है. പറയുകയാണ്, भक्त कहता है, കാറ്റ് കടന്ന് അതിനെ വെളിവാക്കുന്നു. हवा आकर उन्हें वो मार्ग ഈ दिखाता है. മേഘത്തിന് കാലില്ല. बादलों को पैर नहीं, ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ ഈ മേഘം മാറും. लेकिन एक हवा का झोंका ये बादलों को हटा देगा. നമുക്കറിയാം, हम जानते हैं ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ കൊറോണ മാറിപ്പോകും. एक हवा का झोंका काफी है ये कोरोना टल जाने के लिए. കർത്താവ് കാറ്റ് കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വേദത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर ने परमेश्वर वचन में हवा के द्वारा, वायु के द्वारा कई विषयों को किया. ചന്ദ്രൻ വഴിയായി മാറുന്നത് കാറ്റടിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. जब समुद्र तट खुल गया और मार्ग बन गया, वो हवा के वायु के द्वारा. നമുക്ക് ഇറച്ചി കൊടുത്ത് കാറ്റടിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. मसीह लोगों को जो भोजन और मांस दिया वो हवा का ഈ झोंका. കാര്യങ്ങൾ കാറ്റടിച്ച് കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर ने वचनों में कई मार्ग स्थानों में हवा के द्वारा अद्भुत काम किए. ദൈവം കാറ്റിനെ സമയാസമയം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर ने वायु को समय दर समय भेजा है. ഇതാ ഭക്തനറിയാം, ये भक्त जानता था. കാറ്റ് അതിനെ വെളിവാക്കുന്നു. वायु के द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा. ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ഞങ്ങൾ മുക്കുവരാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു. ഇന്ന് പൽക്കാലം പറയട്ടെ, അറിവുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടോ ഒന്നിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ മുട്ടുമടക്കുന്ന ദൈവത്തിനോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ പൽക്കാലം ജീവിക്കുന്നു. जिन लोग कहते हैं हम मछुआरे हैं, लेकिन प्रभु आप तू देख नहीं रहा, हम नाश हो जाएंगे. हमारे ज्ञान के द्वारा किसी तरह से हम बल नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जरूर हम जयवंत हो जाएंगे. എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരുന്നു. एस्तर का पुस्तक में हम लौट कर आए. 3-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ जब तीसरा अध्याय 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, മുന്നിൽ വായിക്കുന്നു, ശൂഷൻ പട്ടണം കലങ്ങിപ്പോയി. हम वहां पर पढ़ते हैं शूशन जो नगर था वो गल गया. ഹാമാൻ തടഞ്ഞിരിക്കുക. हमान वहां ज्योतिमय होकर खड़ा है. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമനാ. राज्य में दूसरा अंक पे था. वो സ്വാധീനവും കാശും ഉപയോഗിച്ച് सारा बल और उसका धन संपत्ति को उपयोग करते हुए തകർക്കുവാൻ രേഖ എഴുതി. परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए उसने लिख दिया. എല്ലാം മൂടപ്പെട്ടു. सब कुछ ढक गया. ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല. कोई मार्ग नहीं दिखा. ആ സമയം उस समय पर യഹൂദയായിരിക്കുന്ന എസ്തേർ അവിടെ രാജ്ഞിയാണ്. उस समय पर एस्तर वहां पर रानी बनकर थी. മുർദെഖായി രട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് मोर्देखाई इस प्रकार से वस्त्र को पहनकर, ചാരം വാരിയിട്ടുമുണ്ട്. राख को डालकर, കൈപ്പോടെ നിലവിളിക്കുക. कड़वाहट के साथ, दर्द के साथ वो परमेश्वर को पुकारने लगा. ഒരു ഭക്തൻ एक भक्त പ്രശ്നമല്ല കാണുന്നത്, प्रश्न को नहीं देखता, പ്രശ്നത്തിനൊപ്പം ദൈവമാണ് കാണുന്നത്. लेकिन प्रश्न के उस पार परमेश्वर को देखता है. സൊലൊമോനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, सलोमोन के बारे में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं. സൂര്യന് കീഴെ सूर्य का नीचे നടക്കുന്നതൊക്കെ जो कुछ चलता है,
ആരാന്നറിയുവാൻ वो कौन है जानने के ഞാൻ लिए മനസ്സ് വെച്ചു. मैंने मन रखा। സൂര്യന് കീഴ് सूरज के नीचे എല്ലാം മായ. सब कुछ माया है, സൂര്യനപ്പുറത്ത് लेकिन सूरज के उस पार ദൈവത്തെ താൻ കണ്ടു. एक परमेश्वर को उसने देखा। താൻ മനസ്സിലാക്കി इसने जान ഈ ली സൂര്യനപ്പുറത്ത് ये सूरज के उस पार, നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത്, हम जो देखने वाले कष्ट के उस നമ്മുടെ पार, ഇരുട്ടിനപ്പുറത്ത്, हमारी जिंदगी के अंधकार के उस നമ്മുടെ पार, വേദനകൾക്കപ്പുറത്ത്, हमारे दर्दों के उस നമ്മുടെ पार, ഭാരങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് हमारे बोझ के उस ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. पार परमेश्वर जीवित है। എല്ലാത്തിനും മീതെ, सबसे महान പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മീതെ हमारे प्रश्नों से ഒരു जीवन ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. परमेश्वर जीवित है। ദാവീദ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, दावीद सदा कहता था എന്റെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. मेरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान। മരണം മുന്നിൽ കാണുമ്പോഴും मैं जब सामने कष्ट അവൻ देखता ദൈവത്തെ കണ്ടു. वो परमेश्वर को देखता था। യേശുവിനെ കാണുവാൻ यीशु को देखने का കഷ്ടം അനുഭവിച്ച कष्ट अनुभव ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. कई मसीह लोग हैं, പീഡനം അനുഭവിച്ചവരുണ്ട്. दर्द उठाए लोग हैं। ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ നമ്മുടെ രക്ഷകനെ हमारे മുഖാമുഖമായി കാണുവാൻ ഇത് മുഖാമുഖമാകട്ടെ. ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി आत्मा से भर കരയുന്നുവെങ്കിൽ, आंसुभाएं പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, प्रार्थना ഈ करें। ലോക്ക്ഡൌണിൽ लॉकडाउन में ദൈവമക്കളിലൂടെ मसीह लोगों के ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചു. स्वर्ग इच्छोकरण മിഷൻ പട്ടണം കലങ്ങിപ്പോയി. जो वो नगर जब ढल गया, ഇത് എസ്തേർ കണ്ടപ്പോ एस्तर ने जब ये देखा, നല്ല ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തയച്ചു. अच्छा वस्त्र देखा, മുർദെഖായി തിരിച്ചു കൊടുത്തയച്ചു. मोर्देकाई ने उसे लौट दी। എന്നിട്ട് 14 വാക്യത്തിൽ ആ മറുപടി മുർദെഖായി ഇങ്ങനെ വായിക്കും, നീ ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ अगर तुम इस समय पर मौन रहे तो യഹൂദന്മാർക്ക് यहूदियों के लिए മറ്റൊരു വശത്തു നിന്നും दूसरे एक स्थान से ഉദ്ധാരണവും രക്ഷയും ഉണ്ടാകും. उद्धार और छुटकारा प्राप्त होगी। ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഉറപ്പ്. यही एक भक्त का दृढ़ता है। പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തൻ, प्रार्थना करने वाला एक भक्त, ആത്മകവനം ചെയ്യുന്നവൻ, आत्मा में मन करने वाला भक्त, ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവൻ, उपकार करने वाला, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ, प्रार्थना करने वाला, ഉപവസിക്കുന്നവൻ, उपवास करने वाला, പ്രശ്നമല്ല കാണുന്നത്, वो प्रश्न को नहीं അവൻ देखता വിടുവിക്കും ദൈവത്തെയാണ് കാണുന്നത്. बल्कि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर को देखता। അവൻ എസ്തേറിനോട് പറഞ്ഞു, उसने एस्तेर से कहा ഈ ഡ്രസ് താൽക്കാലികമാണ്, ये वस्त्र से कुछ समय के लिए പക്ഷെ है, വിടുവിപ്പാന്റെ ദൈവ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. लेकिन छुड़ाने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം എല്ലാ വാതിലും പിശാച് അടച്ചു. हम सब जानते हैं शैतान ने सारे मार्ग बंद कर दिए। അവര് മനസ്സൊന്നിച്ചുകൂടി वे एक मन हो गए, പലയിടത്തും ചെറിയെങ്കിലും इन स्थानों में तितर മനസ്സൊന്നിച്ചുകൂടി वे मन एक मन ഒരുമിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. एक मन होकर प्रार्थना किए। ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും സ്വർഗത്തിൽ കയറി. उपवास और प्रार्थना स्वर्ग में पहुंची। സാത്താൻ വെച്ച് ഓരോ വാതിൽ ദൈവം തുറന്നു കൊടുത്തു. परमेश्वर ने एक पे एक द्वार खोलना शुरू ഓരോ വാതിലും തുറന്നു കൊടുത്തു. किया। एक द्वार परमेश्वर ने खोल दी। പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का हाथ काम करने लगे। ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ परमेश्वर जब काम करने लगा, നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കപ്പുറമായി, हमारे विचार उस पार, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനപ്പുറമായി हमने इच्छा किया उस पार, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന സ്വർഗമാണ് प्रार्थना उतर आया वह स्वर्ग ഓരോ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. एक स्थानों में कार्य ഇതാണ് करने लगा। മോർദെഖായി പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. ये काम मोर्देकाई ने किया वो विषय നമ്മൾ കാണാത്ത വഴികൾ കൂടെ हम न देखे हुए मार्ग വിടുവിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. परमेश्वर छुड़ाने के लिए बरकत है। നമുക്കറിയാം മോശ ജനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്. हम जानते हैं मूसा किस प्रकार से जन्म हुआ। അവനെ കൊല്ലുവാൻ തയ്യാറായ ഭവനത്തിൽ ദൈവനെ വളർത്തി. मूसा को जिस घराना उसे मार देने के लिए इच्छा रखा, उसी घराने में परमेश्वर ने मूसा को पालन पोषण किया ഓടിട്ട കട്ടിൽ ദൈവനെ കിടത്തി. और वहां पर उस मेज पर उसे लेटाया। ഇത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാണ്. ये प्रार्थना का बल है। അവനെ അവിടെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കളിച്ചു നടന്നു. और मूसा उस राज्य घराने में खेल कूद कर ദൈവം किया। പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവനെ വളർത്തു. मूसा परमेश्वर ने कहा मैं इसे जिला ദൈവ ജനത്തെ ആത്മീയമായി വളർത്തുവാൻ, मसीह लोगों को परमेश्वर आत्मिक से അവനെ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ हमने तैयार ഒരു कर दिया। മുഖാന്തരമായി മാറട്ടെ. एक मौका बन जाए। സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയാണ്, भजन का लेखक कहता ഞാൻ है, നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ കഷ്ടതരായിരിക്കുന്നതിന് ഗുണമായെന്ന്. मैं तुम्हारे नियमों को पढ़ने के लिए अब इस कष्ट में रहने के वजह से वो मेरे लिए भला हुआ। അവൻ തലമൂടി നിരാശനായി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ जब वो सर ढक कर निराश होकर जब लौटा, എന്റെ ഭാര്യ പറയുക, उसका पत्नी कहता है നിനക്ക് കാശുണ്ടായിരിക്കാം, तुम्हें धन संपत्ति होगा, സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കാം, तुम्हें स्वतंत्रता होगी, അവൻ യഹൂദനെങ്കിൽ लेकिन अगर वो यहूदी है तो നീ അവനെ ജയിക്കത്തില്ല. तुम उस पर जयवंत नहीं हो सकोगे। ഇന്ന് പകൽക്കാലം इस सुबह के समय കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, सुनने वाले मसीह लोग, നമുക്കൊരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. हम एक ही विषय करें। ഇവരെ കിടക്കുന്ന ഒരു മനസ്സോടെ पितर लोग एक मन होकर രാവിലേക്ക് തിരിയുമെങ്കിൽ परमेश्वर के करीब लौट ദൈവം പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനാണ്. परमेश्वर कार्य करने के लिए बलवंत है। ചിന്ത
ചിന്താഗതികളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് विचारों के उस पार, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലങ്ങൾക്കപ്പുറമായി हमारे विचारों के उस पार, പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യത്തിൽ प्रार्थना के बीच ദൈവത്തിന്റെ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. परमेश्वर का हाथ हमारे लिए जरूर है। ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ നമുക്കറിയാം. हम जानते हैं पहला लॉकडाउन किस प्रकार से था। പെട്ടകത്തിനകത്ത് 8 പേര്, संदूक में 8 लोग, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, नाव में 8 लोग और उसमें जानवर थे। മാസങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കിടന്നു. कई महीने वे लॉकडाउन में बंधे थे। വെള്ളം ദേശത്ത് പൊങ്ങി. समुद्र उठा देश में, സ്തോത്രം. ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് और उस नाव के अंदर സുരക്ഷിതരാണ്. वे सुरक्षा उन लोग ने प्राप्त की। പാപം പെരുകിയ കാലം, एक पाप से भरी हुई दुनिया का जमाना, വർദ്ധിച്ച കാലം, वहां पर ऐसा पीड़ा बढ़ा हुआ जमाना, പാപം അധർമ്മം വർദ്ധിച്ച കാലം. पाप और अधर्म बड़ी हुई ലോകത്തെ समय। കണ്ണോടിച്ചാൽ ये दुनिया में जब देखे പാപം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. पाप बढ़ रही है, സ്വർഗത്തെ ദൈവമാണ്, स्वर्ग परमेश्वर നീതിമാനെ ശ്രദ്ധിക്കും ദൈവമാണ്. वो ध्यान पूर्वक देखने वाला परमेश्वर है। ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ നടുവിൽ आज दुनिया के लोगों के बीच ഒരു ഭക്തനുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് മറക്കരുത്. अगर एक भक्त है तो परमेश्वर से ध्यान पूर्व देखता है। പെട്ടകം തയ്യാറാക്കി और नाव को तय किया, ലോക്ക്ഡൌണിലായി. लॉकडाउन में आए। കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ कुछ दिन बीतने पर പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ये नाव ऐसा तैर रहा था। എങ്ങനെയാക്കി कैसा होगा? ആഹാരം തീരുന്നു, भोजन समाप्त हो रहा है, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. सब कुछ समाप्त हो रहा है। ഞങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കും? हम क्या भोजन प्राप्त करें? 8-ാമത്തെ 1-ാമത്തെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ദൈവം നോഹയും പെട്ടകത്തിൽ ഉള്ളവരെയും ഓർത്തു. और हम उत्पत्ति में इस प्रकार से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने नाव में रहने वाला नोआ और वहां के सारे लोगों को परमेश्वर ने याद रखा। ഓർക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്, हमें याद रखने वाला एक स्वर्गीय परमेश्वर है। ഓർക്കുന്ന സ്വർഗമുണ്ട്. हमें याद रखने वाला एक स्वर्ग है। അവിടെ ഓർത്തു, ഒറ്റ കാറ്റടിപ്പിച്ചു, അവർ പുറത്തിറങ്ങി. और वहां उन्हें याद करके एक हवा का झोंका को भेजा और वे लोग नाव से बाहर उतरे। വിശാലമായ അനുഭവം. विशालता का एक अनुभव देखिए। എനിക്ക് ഏതാണ്ട് 70% ആൾക്കാരും ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് ഭവനത്തിൽ കഴിയുക. आज के समय पर करीबन 70% मसीह लोग अपने घर में समय बिता रहे हैं। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम प्रार्थना में लोग IPC ദൈവമക്കൾ ദൈവദാസന്മാർ ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. IPC के सारे मसीह लोग, प्रभु के दास लोग सब एक मन होकर प्रार्थना ഒറ്റ करें। കാറ്റ് മതി ഈ അവസ്ഥ മാറുവാൻ. एक हवा का झोंका काफी है सारे अवस्थाओं को बदल दे। ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുമ്പോൾ ये लॉकडाउन जब समाप्त हो ബലത്തോടെ, पूरी बल से, വലിയ പ്രത്യാശയോടെ, बड़ी आशा से, സമർപ്പണത്തോടെ, समर्पण से, ശക്തിയോടെ शक्ति से സ്വത്രം മുന്നോട്ടിറങ്ങുവാൻ हम आगे आ बढ़ने के മുഖാന്തരമായി മാറട്ടെ. लिए एक मौका बन जाए। അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ, अनुभव किया हुआ कष्ट നഷ്ടങ്ങൾ और जो ലാഭമാക്കി തരുവാൻ उसे अनुग्रह पर बदल, നമ്മുടെ കണ്ണീര് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ हमारे आंसू अगर स्वर्ग में അവരെ है, കൂട്ടി നന്മയാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവശക്തനാണ്. परमेश्वर हमारे उसे भलाई में बदलने के लिए बलवंत है। വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരാം. बड़े वचन में लौट कर ഇപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ വെളിച്ചം ശോഭിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല. अभी आकाश मंडल में ज्योति प्रकाश देखने का, കാറ്റുകളെ വെളിവാക്കുന്നു. लेकिन वायु चलकर उसे നമുക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരാം. हम परमेश्वर के करीब आए, പ്രമാണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തു വരാം. वचनों के करीब आए, അവരെ കാണാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. प्रभु को देखने में समर्पण करें, ദൈവങ്ങളെ സമൂലമായി സമർപ്പിക്കാം. प्रभु का हाथ पूरी तरह सौंपे, നമ്മളേക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. वचन के सामने हमारे दिल को परखेंगे. हालेलुया. अब प्रभु ने हमें दिया वचन के सामने हमारे दिल को परखेंगे. इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु की चरणों पर स्तुति, आराधना और उपवास के साथ प्रभु की संगति को महसूस करते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए आइए हम अपने आप प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे. इस लॉकडाउन कब खुलेगा हमें नहीं जानता है, लेकिन हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे. आइए हम प्रार्थना करेंगे. हमारे प्यारे आसमानी बाप खुदाबंद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. तुझे वचन के लिए धन्यवाद प्रभु. हम अपने आप आपके हाथों में समर्पित हो प्रभु. तूने वचन दिया, वो महान नित्य वचन के लिए धन्यवाद प्रभु. जो सुना है सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. इन दिनों में समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें तू मदद कर प्रभु. हमारे IPC नॉर्थ नजदीकी सारे पासवानों के लिए, विश्वास के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. सारे सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. सबको तो आशीष दे. इन दिनों में वचन में, पवित्रता में आगे बढ़ने पाए प्रभु. आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु. यीशु मसीह के नाम से हमारा प्रार्थना को सुनाओ, कबूल कर सुखे पिता. आमेन. और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यदान इस विषय के लिए प्रार्थना कर, तमाम विषय के साथ सबके साथ प्रभु की आगमन तक होती रही। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद।